Hello बच्चों, let's read the question. Which groups of French society benefited from the revolution? Which groups were forced to relinquish power? Which sections of society would have been disappointed with the outcome of the revolution? तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन. तो इसमें ये पूछे जा रहा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसमें कौन सा ग्रुप ऑफ सोसाइटी था जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला. ठीक है. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर. सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है कि कौन सा ग्रुप था इन फ्रांस जिसको अपना पावर रिलिंक्विश करना पड़ा. रिलिंक्विश मतलब गिव अप करना पड़ा. और थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, लेट्स सी विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन. तो सबसे पहले हमें ये पूछा गया कि कौन से ग्रुप को बेनिफिट होगा. सेकेंड में ये पूछा गया कि किसको अपना पावर गिव अप करना पड़ेगा. और थर्ड में ये पूछा जा रहा है कि कौन से सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब कौन सा ग्रुप वो था जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ था, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था. दे वर नॉट हैप्पी विद व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन, व्हाट चेंज द रेवोल्यूशन ब्रॉट. So now when we look at the question, you tell me which were the groups that was prevalent in the French society at that point of time. Correct. The French society at that point of time was divided into 3 estates. Yes, the first estate, the second estate and the third estate. So now the first and the second estate, it consisted of nobility and clergy. And before the French Revolution took place, they were very powerful. Okay, they have all the voting rights in their hands. They were not supposed to pay taxes. They enjoyed all types of power, all types of benefits. And which were the people who were suffering? The third estate was suffering when the revolution did not take place. You know, they were businessmen, workers, farmers who were forced to work for long hours, who were forced to pay taxes. They did not have any power in their hand. They did not have any rights in their hand. So now when we look at that, you tell me what would be the answer of the first question. Tell me which society you feel would have been benefited if the French Revolution would have taken place. Yes, correct. It was actually the third estate. Because at the end उनको तो कुछ था ही नहीं revolution के पहले कोई power, और suddenly you know revolution हुआ, changes आई and they became powerful. Now if they become powerful, whose power is going? Who has to relinquish power? Correct. The privileged section of the society, that is the first and the second estate, which consisted of nobility and clergy. Now third question पे चलते हैं हम. अब मुझे बताओ what would be the section of society who are disappointed? Yes, of course. अगर थर्ड मजे कर रहे हैं वेरी हैप्पी, तो कौन सा होगा? फर्स्ट वाला. बिकॉज उनसे सारे पावर छीन लिए गए थे. यू नो, देयर वाज विड्रॉल ऑफ पावर विच हैज बीन टेकन प्लेस इन फ्रांस. उनके पास जितनी भी राइट्स थी, दैट दे विल नॉट पे टैक्सेस एंड यू नो द थर्ड एस्टेट विल वर्क फ्री फॉर देम एंड दे विल बी वेरी प्रिविलेज एंड उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता. वो सब ले लिया गया था. इसलिए अब सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कौन होंगे? Yes, it was the privileged class, that is the first and the second estate. I hope you have understood the question as well as the answer.